This is Tarapur. Located 100 kilometers from Mumbai, it is one of Maharashtra's largest industrial hubs and one of the most polluted too. Next to the coast, the town is surrounded by villages where fishing is a way of life. Residents of these villages have long complained of water pollution and health issues. 100 से 50% पकड़ो ऐसा प्रॉब्लम है। अचानक एक दिन केमिकल छोड़ दिया ना, पूरा सिपाही वो खराब हो गया था। Almost everyone we've spoken to say that the groundwater is completely contaminated. So a fisher folk collective from Tarapur took the industries to court almost a decade ago. Every individual industry, and there are hundreds, separately filed appeals before the Supreme Court. 10 years later, it is an uphill fight against industries they say are poisoning their creeks and waters. ये है ना, आपने को अभी अभी फोटो दिया ना अपना, वो शेल फिश का वो खराब हो गया है, तो इन्हें भेजा था। At 73, Ashok Tandel, a retired government employee and from a traditional fishing family, is one of the lead petitioners in the case against the industries of Tarapur MIDC. तो अचानक एक दिन केमिकल छोड़ दिया ना, पूरा सिपाही वो खराब हो गया था। पूरा खराब हो, जब हम लोग निकाले दूसरे दिन ले जाने के लिए, तभी देख रहे तो एक एक खुल रहा है। तो कब आता है केमिकल? अभी ऐसा बोल नहीं सकते, कभी छोड़ते हो, एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, कभी भी छोड़ते हो लोग। लास्ट कब आया था? लास्ट अभी 1-1.5 महीने पहले आया था। Tarapur's industrial belt spans over 1,000 hectares, making it one of Maharashtra's largest industrial hubs. Rivers and creeks cut through the many villages around this industrial town. For years, fishing families here have raised the same alarm. The water is poisoned and their livelihoods are slipping away. आप क्या करते हैं? अभी काम पे जाते। कहाँ? पैसा कंपनी में? कंपनी में MIDC में। तो ये काम छोड़ के MIDC चलेगा? क्या करेगा? इधर खाड़ी में नहीं मिलता है तभी जाता है। नहीं रखा है हाँ, फिर पहला खाड़ी में जाता था, पहला हमारा धंधा बंद करो और हमारे यहाँ ज्वाइन करो, नौकरी करो हमारा। Revati Arekar, once a fisherwoman, has given up the work her family depended on. RTI data show that in these villages, the number of fishing families has decreased by half between 1975 and 2016. For Chandrakant Pagdare, fishing in Murbay Creek has been his life's work. But after more than 20 years on these waters, he now returns home with painful rashes on his skin. जाके आता है ना तब मालूम पड़ता है, नहाते और रात को खुजली पता पड़ता है, ज़्यादा होता है खुजली। और खुजली का टैबलेट देता है, उतना ही, वो ख़त्म हो गया फिर चालू। नहीं, अभी 3-4 साल हो गया, ये प्रॉब्लम चालू हो गया। दूसरे किसी को है 100 से 50% पकड़ो ऐसा प्रॉब्लम है। सावकाश ह्याच्यावर पाय द्या आणि दोन्ही साईडला हात पकडा। बंद कर। Mahendra, who runs a small ferry, was forced to stop working for 2 months. A stubborn skin infection left him unable to even step into his boat. मग डॉक्टरने 2-3 वेळा सांगितलं की सांगते हे गोळे घ्या ते गोळे घ्या। मी समजा साहेब गोळे घेणार, पण ते गोळ्याचे काहीच इफेक्ट होत नाही। तर मग मला एक जणाने सांगितलं सोनी डॉक्टरकडे जा। सोनी डॉक्टर तो हाडाचा स्पेशलिस्ट डॉक्टर आहे। त्याने मला फक्त उभा ठेवला आणि उभा ठेवल्यावर त्याने सांगितलं की
हे केमिकलच्या पाण्यामुळे झालेलं आहे. 2 महिने घरी राहिलो. 2 महिन्यामध्ये मी दुसऱ्या मुलाला ठेवत होतो, त्याला 25,000 पेमेंट देत होता. सावकाश उतरा, सावकाश, एक साईड चला. कारण मला ती कॉन्ट्रॅक्ट घेतलं म्हणजे मला ती होडी चालवायचीच आहे. कारण होडी बंद केली तर 500 लोक घरी बसतील, वरून जातील. वरून गेल्यावर त्यांना खर्च जास्त होतो, इकडनं खर्च कमी असतो. हे 7 किलोमीटर आहे, ते 15 किलोमीटर आहे. Doctors in 3 fishing villages, Murbe, Dandi and Satpati, told us the same thing. Water pollution could be one reason for these skin problems, while heat, humidity and sweat worsen the condition. पानी की वजह से हो सकता है. मैं उनको बोलता हूँ कि पानी की वजह से आपको हो सकता है. इसलिए मैं जब उनको क्या बोलता हूँ कि आप सुबह जब काम पे जाते हो, कोई फ़िशिंग का काम करते हो, तो आते ही घर पे आते ही जो अच्छा पानी है उससे आप वॉश करो हैंड. वही पानी ज़्यादा देर तक हाथ में नहीं रहना चाहिए. और शाम को नहाने के लिए बोलता हूँ उनको, मैं 2 टाइम नहाने के लिए बोलता हूँ. ये स्किन डिसीजेस कौन सा है, तो क्षय रोग, उनका टीबी का, कर्क रोग, कैंसर का. ये कितना है सबसे हाँ. ज्यादा क्या है? तो 13-14 में वो स्किन डिसीजेस 72 है, 14-15 में 216 है, 15-16 में 336 है. ऐसा बात है, इसमें सब विवरण दिया है. In just 1 year, the rural hospital in Boisar recorded 4,000 cases of skin disease. Over the last decade, primary health centers in 16 villages near Tarapur and the rural hospital in Boisar have logged over 3,200 cases of skin disease. Most came from villages closest to the industrial Tarapur town. The data does not include private clinics. In 2016, local officials reported rising cases of breathing troubles too and warned that some fish species were nearly wiped out. I've just stepped out of the Palghar District Health Office and sources here tell me that while there is evidence that water pollution does exist, there's no clear conclusive evidence of the impact of water pollution on the health of people. They say that a comprehensive study, perhaps by the ICMR, needs to be undertaken to determine this. In 2020, the National Green Tribunal sent a team of experts to test Tarapur's water and creeks. Their findings were alarming. Traces of toxic chemicals that can cause cancer and other health problems. Yet, the report avoided drawing conclusions. This is the kind of polluted water that people are getting here in Pastal. Almost everyone we've spoken to say that the groundwater is completely contaminated. आपने पहले पानी टेस्टिंग के लिए दिया था? हाँ किया. क्या हुआ उसके बाद? कुछ बोला ही नहीं, ग्राम पंचायत ने ही लिया था. 99 को मैं बोर लगाया है, 99 को, तो उसके आगे से है. ये आप पानी फार्म में यूज़ करते हैं? फार्म में यूज़ करते हैं, कपड़ा धोने के लिए भी यही यूज़ करते हैं. हाँ. हाँ, कपड़ा धोने के लिए. तो प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, वॉशरूम में यही है. खाली पीने के लिए ग्राम पंचायत का आता है ना, वही. The court's own committee uncovered what villagers had long said. The treatment plant meant to clean industrial waste was failing. Tests found chemicals, metals and foul-smelling water not only in the creeks but also in the groundwater people use at home. ये उनका जो पाइपलाइन था वो छोड़ने का पोल्यूटेड वाटर, ट्रीटेड पोल्यूटेड वाटर, अनट्रीटेड पोल्यूटेड वाटर, वो तो बंद हो चुका. तो उनको भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, पानी किधर छोड़े. तो वो ऐसा बोर करके नीचे डालते थे, स्टोर करके दूसरी जगह फेंकते थे. तो दूसरी जगह फेंकने का जगह तो वही था खाड़ी में. अच्छा, तो उधर छोड़ते थे. वो रात के समय छोड़ते थे, कोई सिक्का साथ लेते थे लोकल लोगों का. अभी कैसे करते हैं, जो वो लोग स्टोर करके, कभी हाई टाइड रहता है, रात का समय होता है, कोई उधर नहीं देख सकते, वो टाइम पे वो छोड़ देते हैं.
The National Green Tribunal ordered more than 100 industries, along with the Tarapur Environment Protection Committee and the Maharashtra Pollution Control Board, to pay over 160 crore rupees in 2020 for environmental damage and restoration. The amount was then increased to 279 crore rupees 2 years later. The Tarapur Industrial Manufacturing Association pushed back, arguing that the findings were flawed and the fine was unfair. They did, however, deposit 30% of the compensation ordered in 2020, according to an RTI we accessed. Unfortunately, what happened after that, and this is now the situation has been prevailing since then, is that every individual industry, and there are hundreds, separately filed appeals before the Supreme Court. And so when the first batch of these appeals came up before another bench of the Supreme Court actually stayed the entire judgment. And the result of that is basically that none of those directions in the NGT judgment have been complied with since then. The National Green Tribunal also ordered health camps to be held in affected villages. But residents say hardly any were held. RTI data confirms that only a few camps have been held since then, mainly in Satpati. Details regarding the camps were not mentioned. Health officials who spoke to us off the record said they lacked specialist doctors to run them. लेकिन ये कैंप क्यों लगाया है, ये कौन सा भी ग्राम पंचायत को आपने बताया नहीं, हमें पिटिशनर को हमें बताया नहीं, कौन सा भी फिशरीज सोसाइटी को बताया नहीं, डायरेक्ट आ गए और आपने ये काम चालू किया. Today, Tarapur has an upgraded effluent treatment plant with a capacity of 50 million litres per day, which also discharges the treated waste approximately 5 kilometres into the Arabian Sea. Although the new plant is twice the capacity of the older version, it is yet to reach full operational capacity. आता असे आहेत नाही यार शिपल्याचे आहेत ना ते पाणी सोडल्यावर डायरेक्ट असे होतात असे होतात पाणी सोडेल तेव्हाच होतात नाही तर चांगल्या राहतात पाणी सोडलं ते सर्व असे होतात खराब होतात. Villagers insist that factories continue to dump untreated waste into the creek secretly, more often during the monsoon when it's easier to hide. पहले पानी तो अच्छा लगता था, अभी बास भी बहुत मारता है पानी का, कभी कभी रेड कलर होता है पानी का, कभी कभी ब्लॅक कलर होता है पानी का. खूप खाजे येतो असं आणि छोटे छोटे कल्या वगैरे पाणी सोडल्यावर जेव्हा पाणी सोडतील तेव्हा शेत नाही तर नाही येत. When we visited Tarapur's drains and outfall points, the stench was overwhelming and the water ran discolored. We sent detailed questions to the Maharashtra Pollution Control Board, the Palghar District Health Office and the Tarapur Industrial Manufacturers Association regarding remediation plans for the health and environment in the area, as well as allegations from the residents. We didn't get an official response. हमारा खाड़ी का, ज़मीन का, वेटलैंड का, सीशोर का, ये सब का वो रिस्टोरेशन होना मांगता है, ये हमारा डिमांड है.